You are tired? Aren't you feeling well? No. Okay. I will take you to the doctor. Okay. Open your mouth, please. Close it. You have got 100 fever. What's your problem? I've got pain in the ear and a pain over here. Okay, we'll just see. This time. Here is clear. Just open your mouth, please. Pull out your tongue. Ah, good. See, your child has got mouth fever. Anybody else has got in the class? Yes, my friend Harsh has got. So Harsh has also got it. So that means he has got from the school. It's an infectious disease and it spreads from one person to another. Infectious diseases spread from person to person. Tuberculosis, measles, chickenpox, polio, whooping cough, diphtheria, influenza, and cholera are all infectious diseases. There was a major outbreak of cholera in Delhi in July 1988. It claimed many lives. In the past, these diseases occurred widely. In the 17th century, plague caused panic and terror. Plague took a heavy toll of human life. Many infants and children died of childhood diseases like smallpox, chickenpox, diphtheria, or got crippled by polio. In old graveyards, we find that many of the graves are of children. As the transport developed, people traveled to different places, carried diseases with them, and infected the local population. Until the middle of the 19th century, these diseases were shrouded in mystery and remained a great threat to human beings. With the development of science and technology, we are better equipped today to cope with them. Infant mortality rates have halved in our country in the last 70 years. Today, childbearing is no longer a dangerous ordeal and delivery is quite safe. Smallpox has been completely eradicated, but tuberculosis, measles, chickenpox, polio, and other infectious diseases are still rampant, so the war against infectious diseases continues. We are fighting to control them. But before we discuss causes of infectious diseases, let us see the factors which affect our health. Disease results from a complicated interaction between man and his environment. Even during Vedic times, people knew that the environment is intimately related to health. Now let's see the kind of environment majority of our people live in.
Many people do not have proper housing. They are cramped in small, unhygienic places like this. Often, the houses are surrounded by filth and dirty, stagnant water. Do they have any choice? Not really. Water is always in short supply. In rural areas, people have to walk for miles for a few pitchers of water. Safe drinking water is not available to majority of our population. Good food is essential for maintaining our health, but almost half of our population is undernourished. And the food they eat is neither nutritious nor hygienic. Can the people be healthy in such an environment? No. A clean environment is crucial for the health of an individual and the community. Also, people are indifferent to their surroundings and contaminate and pollute it without thought or concern because they are unaware of its importance. Due to this ignorance and negligence, even in the homes, food gets contaminated. Many of us relish food from the market stalls and don't bother to check if it is clean and safe to eat. Some people have unhygienic habits and attitudes. For many restaurants, this water is good enough for washing dishes. This multi-purpose towel is also quite common. People don't mind sharing their glasses. Not only at home, but even at the workplace, one towel is commonly used by everyone. How is environment related to health? What is wrong with these things? Look at these grapes. Do you find anything wrong with the grapes? Let's see. So many tiny living creatures. These are bacteria, a class of microbes. They are the cause of many infectious diseases. We often call them germs. Because germs are not visible to the naked eye, the cause of infectious diseases was not known for many centuries. About 300 years ago, Antony van Leeuwenhoek was the first person to observe the microbes under a lens. In the middle of the 19th century, Louis Pasteur made the important discovery that germs reproduce like other living beings. He found that microbes were present in the environment. He also indicated that microbes cause diseases and set the foundation for the germ theory of disease. Later, Robert Koch
established that a specific bacteria is responsible for a specific disease. Generally, bacteria have three shapes. The round ones are called cocci. The rod-shaped ones are called bacilli. Some are spiral in shape, like these. With the advent of the sophisticated microscope, we can see the details of the structure of bacteria and understand the nature of their activities. And that is how it came to be known that cholera is caused by this comma-shaped bacteria. And tetanus, a fatal disease, is also caused by bacteria of this shape. Tuberculosis is caused by these bacteria. This child is suffering from pneumonia. This is the affected lung of the patient. Pneumonia is caused by these bacteria. Do you know what causes common cold and cough? You have probably heard of the virus. They are another class of microbes. Viruses are much smaller than bacteria. They are so small that they cannot be seen under a light microscope. The invention of the electron microscope in the early 1950s has been an important landmark in the war against disease. The electron microscope can magnify objects several thousand times. This is the poliovirus as seen under the electron microscope. Some other viral diseases are smallpox, measles, and mumps. Another widespread disease is malaria. This little creature not only disturbs sleep, but its bite can also cause malaria. Every year, millions of people suffer from this common disease all over the world. When a female Anopheles mosquito bites, it transmits a microbe called Plasmodium in the blood. It lives some stages of its life in man and causes malaria. Plasmodium belongs to a class of microbes called protozoa. In some African countries, a disease known as sleeping sickness is caused by the bite of a tsetse fly, which transmits a protozoa called trypanosoma. This box containing food was lying here for a couple of days, and the fungus grew over the food. Fungi are also a class of microbes and cause ringworm, athlete's foot, and other diseases. Worms also cause infectious diseases. They are bigger organisms. Some stomach problems are caused by roundworm, tapeworm, and other worms. In this picture, you see whipworms in the human intestine. Elephantitis, a common disease in India, is also caused by worms. These worms enter our body through food and water and make their home in the gut. Hookworm enters by penetrating the skin of the foot. But where do all these microbes come from? Germs are all around us in the soil, water, filth, and excreta. Germs love filth. Insects also carry them. You will be surprised to know that millions of them live harmoniously on our skin.
But not all the microbes are harmful. Many of them are extremely useful and convert milk into curd, ferment dough for bread, and help in making cheese and wine. Some bacteria act as scavengers by decaying waste matter and releasing useful nutrients in the soil that are essential for plant growth. We have now learned to use microbes and biotechnology for making some antibiotics, hormones, and vitamins. So we have seen that microbes are in the environment, but how do they spread the disease? Unclean food and water are the greatest source of microbes and spread many diseases in the community. This is how waterborne diseases are spread. Unhygienic habits in the homes also spread infection. Germs also spread from one person to another through air. They can infect our eyes and ears and can enter our skin if it is cut. Once the microbes enter our body, how do they harm us? Their main strategy is that they multiply in our body very fast. A bacteria can reproduce by division every 20 minutes. In a few days, millions of offspring are produced. Look at this mighty tree. First, a small insect enters into it and starts eating it. Then the insect multiplies. The progeny continually multiplies and finally destroys the whole tree. Germs destroy us in the same way. So we have seen how germs can find their way into our body. Now you may be wondering as to why it is that we do not always fall sick. Our body has an elaborate and powerful defense system which protects us against disease. It is composed of billions of white blood cells which stain the blood as guards and circulate throughout the body.
There are different ways in which white blood cells fight against these microbes. Some white blood cells destroy bacteria by engulfing them. Some white blood cells produce antibodies which neutralize toxins produced by bacteria. Another interesting way is that some white blood cells tag the invader. This tagging helps the engulfing white blood cells in recognizing them easily. The drugs which we take during sickness help our defense system to fight the invaders. Vaccination protects us from infectious diseases. In fact, it is a way to train our defense system in advance to protect our body against these invaders. Now that we know the causes of infectious diseases, it is possible to prevent them. Certain preventive measures are necessary in order to improve our health status. We are all obligated to maintain clean surroundings in our community. We also know that the health of an individual is affected by the health of the community. Perhaps you are familiar with some of the precautionary measures required at the individual level. The national health programs require implementation of these steps strictly in order to prevent infectious diseases. Our government has made special efforts for maternal and child health care. Important elements of this program are the care of pregnant women and the newborn, the control of tetanus in the newborn, immunization of children against various diseases, especially polio. As a result of this program, the infant mortality rate, after remaining static for many years at 127, has come down in 1980 to 114 per 1,000 live births. Our target is to reduce it to 260 by the end of the century. A concern for the environment and an awareness about clean food, clean water, and hygienic habits will not only help to lead a healthy life for ourselves, also for our children and our community.
क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? वो तुम्हें तो बुखार है। चले डॉक्टर के पास चले। क्या हो गया गोलू? यहाँ कान में दर्द होता है। यहाँ कितने दिन से हो रहा है ये दर्द? बचपन से क्या बेटा? गला दिखाओ करो। किसी और को भी ऐसे आपके स्कूल में? ऐसा है, गोलू को मम्स हो रहे हैं। ये कनपेड़े होते हैं, संक्रामक होता है, एक से दूसरे को होता है। क्योंकि इसके स्कूल में भी इसकी क्लास में एक बच्चे को हुआ तो लगता है ये वहीं से स्कूल से ही ये लेके आया है। संक्रामक रोग एक से दूसरे व्यक्ति को लगते हैं। तपेदिक, खसरा, छोटी माता, पोलियो, काली खांसी, हैजा, ये सभी संक्रामक रोग हैं। दिल्ली में जुलाई 1988 में हैजा इतनी तेजी से फैला कि बहुत से लोगों की जानें गईं। प्राचीन समय में ये रोग व्यापक रूप से फैलते थे। 17वीं शताब्दी में प्लेग के भयंकर आक्रमण ने यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों में तबाही मचा दी और असंख्य लोग इसकी चपेट में आ गए। शिशु व बच्चे अक्सर चेचक, छोटी माता, टाइफाइड के शिकार होकर मर जाते थे या पोलियो से अपंग हो जाते थे। इस अभिशाप की गवाही हैं बच्चों की ये अनेक कब्रें जो पुराने कब्रिस्तानों में हैं। आवागमन के साधन उपलब्ध होने से विश्व में व्यापार बढ़ा। लोग एक स्थान से दूसरे स्थानों पर गए और अपने साथ ले गए बीमारियां, और इस प्रकार बीमारियां भी विश्वव्यापी हो गईं। 19वीं शताब्दी तक ये संक्रामक रोग मानव जाति को आतंकित करते रहे। इन महामारियों का कारण ज्ञात नहीं था, इसलिए ये रहस्यमय ही बने रहे। परंतु आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से हम इन रोगों का मुकाबला करने में सक्षम हो गए हैं। पिछले 70 वर्षों में हमारे देश में अब शिशु मृत्यु दर आधी रह गई है। आज मां के लिए बच्चे को जन्म देना पहले की तरह जोखिम से भरा नहीं है। बच्चे का जन्म अब अधिक सुरक्षित है। शायद आप जानते हो कि चेचक का नामो निशान मिटाया जा चुका है, परंतु तपेदिक, खसरा, छोटी माता, पोलियो और अन्य रोग अभी भी हम पर हावी हैं। इन रोगों से हमारी लड़ाई लगातार चल रही है तथा इनकी रोकथाम के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। संक्रामक रोगों के कारण क्या हैं? ये जानने से पहले ये देखना भी आवश्यक है कि वो कौन सी बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। मनुष्य और उसके पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट के जटिल संबंधों में ही रोग के आधार छिपे हैं। वैदिक काल में भी लोग जानते थे कि स्वास्थ्य का मनुष्य के पर्यावरण से गहरा संबंध है। आइए देखें हमारे देश की अधिकांश जनता किस प्रकार के वातावरण में रह रही है। अनेक लोगों के पास तो रहने के लिए अच्छे घर भी नहीं हैं। कई लोगों को एक साथ ऐसी जगह में गुजारा करना पड़ता है। नालियों तथा मल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण घरों के आसपास पानी सड़ता रहता है। क्या लोग ऐसे वातावरण में स्वेच्छा से रह रहे हैं? नहीं, ये उनकी मजबूरी है। पानी की हमेशा कमी रहती है। गांव के लोगों को थोड़े से पानी के लिए मीलों चलना पड़ता है और करीब 80% जनता को स्वच्छ जल प्राप्त नहीं होता।
हम जानते हैं पौष्टिक आहार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु हमारे देश की लगभग 50% जनता अल्प पोषित है और जो थोड़ा बहुत उन्हें प्राप्त होता है वो न तो पौष्टिक होता है न ही स्वच्छ। क्या ऐसे वातावरण में लोगों का स्वास्थ्य स्तर ठीक रह सकता है? नहीं। स्वच्छ वातावरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, व्यक्ति के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए भी। फिर हमारी जनता ने भी वातावरण को दूषित करने में कोई कसर नहीं रखी है। ये देखिए, लोग वातावरण की स्वच्छता के महत्व को नहीं जानते हैं, इसलिए वो इसे कई प्रकार से दूषित करते हैं। अज्ञान तथा लापरवाही के कारण लोग घरों में भी दूषित भोजन खाते हैं और अपने बच्चों को भी खिलाते हैं। कई लोग खोमचे वालों से चीजें खाकर मजे लेते हैं, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करते कि ऐसा खाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अक्सर होटलों में ऐसा ही पानी बर्तन धोने के काम में लाया जाता है और एक ही कपड़ा हर तरह के काम में इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, कुछ लोगों की गंदी आदतें। अब सवाल ये है कि पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? ये सब स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिप्रद है? ये अंगूर, क्या खराबी है इनमें? आइए देखें। इसे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से देखें। अरे, इतने सारे छोटे छोटे जीव! इन्हें बैक्टीरिया यानी जीवाणु कहते हैं। दरअसल ये ही कुछ संक्रामक रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीवों या माइक्रोब्स को आमतौर पर कीटाणु कहते हैं और रोग फैलाने वाले कीटाणुओं को रोगाणु कहते हैं। बैक्टीरिया सूक्ष्म होने के कारण आंखों से तो नहीं देखे जा सकते, इसीलिए शताब्दियों तक संक्रामक रोगों के कारण मनुष्य को मालूम नहीं हुए। कोई 300 वर्ष पहले सबसे पहले एंटनी वन ल्यूवेनहॉक ने इन्हें लेंस द्वारा देखा। 19वीं शताब्दी के मध्य में लुई पास्चर ने एक महत्वपूर्ण खोज की। उन्होंने दर्शाया कि जीवाणु भी अन्य जीवों की तरह प्रजनित होते हैं और हमारे वातावरण में हैं। साथ ही ये भी इंगित किया कि ये बीमारियों के कारण हैं। इस प्रकार उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज यानी जीवाणु से उत्पन्न रोगों के सिद्धांत की आधारशिला रखी। बाद में मेधावी चिकित्सक रॉबर्ट कॉख ने प्रमाणित किया कि किसी संक्रामक रोग का कारण है एक विशेष प्रकार का जीवाणु। आकार में जीवाणु 3 तरह के होते हैं। गोल आकार के जीवाणु जैसे गोलाणु, जिन्हें अंग्रेजी में कोकाई भी कहते हैं। छड़ोनुमा जीवाणु दंडाणु यानी बेसिलाई, और कुंडली के आकार के जीवाणु सर्पिल यानी स्पाइरल। कुछ समय पश्चात प्रौद्योगिकी के विकास से ऐसे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ जिनसे छोटे जीवों को कई गुना बड़ा करके देखा जा सका। इस प्रकार उनकी बनावट का विस्तार में अध्ययन हुआ और उनके कार्यकलापों को समझा गया। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि हैजे के जीवाणु कौमा आकार के होते हैं और टिटनस जैसा घातक रोग इस आकार के जीवाणुओं से होता है, और तपेदिक के जीवाणु ये हैं। ये बच्चा निमोनिया का मरीज है और ये हैं उसके रोगग्रस्त फेफड़े। निमोनिया के ये जीवाणु हैं। क्या आप जानते हैं साधारण खांसी जुकाम क्यों होता है? आपने वायरस
यानी विषाणुओं का नाम तो सुना ही होगा। ये जीवाणुओं से भी सूक्ष्म है, इसलिए साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखे जा सकते। ये देखिए, एक मानव कोशिका, जीवाणु और वायरस तीनों के आकार का अनुपात। 1950 में अत्यंत विकसित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोगों पर विजय पाने का एक नया कदम था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से किसी भी चीज को हजारों गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इस फोटोग्राफ में पोलियो का विषाणु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाया गया है। छोटी माता, खसरा, कनपेड़े या गलसुआ और अन्य रोग विषाणुओं द्वारा होते हैं। एक अन्य व्यापक रोग है मलेरिया। विश्व के करोड़ों व्यक्ति प्रतिवर्ष इस आम बीमारी के शिकार होते हैं। ये मच्छरों से होता है। ये तुच्छ कीट हमारी नींद ही खराब नहीं करता, साथ ही इसके काटने से मलेरिया भी होता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर काटती है तो वो हमारे शरीर में प्लाज्मोडियम नामक सूक्ष्म जीव छोड़ देती है। ये जीव अपने जीवन की कुछ अवस्थाएं मनुष्य के शरीर में पूरी करता है और बाकी मादा मच्छर में। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यानी प्रजीवाणु जाति का सूक्ष्म जीव है। अफ्रीका के कुछ देशों में स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी आमतौर पर पाई जाती है, जो टिसी मक्खी द्वारा होती है। ये मक्खी शरीर में ट्रिप्नोसोमा नामक प्रजीवाणु छोड़ती है। इस डिब्बे में कुछ खाना बचा रह गया था और कुछ दिन यूं ही पड़ा रहा। इस पर फफूंदी पैदा हो गई, जिसे अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। फफूंदी भी सूक्ष्म जीवों की एक जाति है। इसके द्वारा त्वचा पर दाद, एथलीट्स फुट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ प्रकार के कृमि भी संक्रामक रोग फैलाते हैं। बच्चों अथवा बड़ों में कुछ पेट की गड़बड़ गोल कृमि या राउंडवर्म, फीता कृमि या टेपवर्म और कुछ अन्य कृमियों द्वारा होती है। इस चित्र में आंतों में विप वर्म्स दिखाई दे रहे हैं। फील पांव अक्सर ग्रामीण लोगों में देखा गया है। ये भी एक तरह की कृमि द्वारा होता है और मच्छर के काटने से फैलता है। ये कृमि हमारे शरीर में भोजन व पानी के साथ पहुंचते हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। हुकवर्म त्वचा को भेद कर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब ये जाने कि सूक्ष्म जीव कहां से आते हैं। कीटाणु हमारे चारों तरफ हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये करोड़ों की तादाद में हमारी त्वचा पर रहते हैं और नुकसान भी नहीं करते हैं। वैसे भी सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं। इनमें से कई बहुत लाभदायक हैं और इनकी क्रियाएं हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये दूध को दही में बदलते हैं, डबल रोटी बनाने के लिए आटे को खमीरा करते हैं, चीज व मदिरा बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों की कुछ क्रियाएं हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। ये गंदगी से उपयोगी तत्व निकालते हैं जो पौधों के लिए जरूरी हैं। अब वैज्ञानिकों ने उनका उपयोग बड़े पैमाने पर करने का तरीका खोज निकाला है। जैविक कारखानों के रूप में ये एंटीबॉडीज, विटामिन एवं हार्मोन बनाते हैं। कीटाणु सर्वव्याप्त हैं और इस प्रकार ये हमारे वातावरण में हैं। ये देखिए, एक व्यक्ति किस प्रकार से पूरे परिवार और पूरे समुदाय में रोग फैला देता है।
इस प्रकार की लापरवाही या गंदी आदतें भी रोग फैलाने का कारण होती हैं। हवा द्वारा भी रोगाणु एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं। ये हमारी आंखों व कानों के द्वारा भी संक्रमण करते हैं। कटी त्वचा में भी प्रवेश पा लेते हैं। इतना अदना सा जीव ये शरीर में घुस भी जाए तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? इसकी मुख्य विशेषता है इसकी प्रजनन शक्ति। एक बैक्टीरिया जल्दी से विभाजित होकर 2 बन जाते हैं। ये देखिए किस प्रकार इनकी संख्या शीघ्र ही लाखों तक पहुंच जाती है। ये समझने के लिए एक समान उदाहरण लें। ये एक तंदुरुस्त पेड़ है। एक छोटा सा कीड़ा इसमें घुसता है और इसे खाना शुरू कर देता है और कुछ समय पश्चात कई कीड़ों को जन्म देता है। ये कीड़े असंख्य कीड़ों को जन्म देते हैं जो पेड़ को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार रोगाणु भी मनुष्य की जीवन लीला समाप्त कर सकते हैं। यहाँ एक सवाल और है। कीटाणु सर्वव्याप्त हैं, हमारे शरीर में प्रवेश पा लेते हैं, किंतु हम हमेशा बीमार तो नहीं हो जाते। हमारे शरीर में एक विस्तृत सुरक्षा तंत्र यानी डिफेंस सिस्टम है जो इन कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। ये सुरक्षा तंत्र अरबों श्वेत रक्त कोशिकाओं के रूप में है जो रक्षक की तरह रक्त के साथ शरीर का दौरा करती हैं और विभिन्न प्रकार से हमलावर कीटाणुओं का मुकाबला करती हैं। कुछ WBCs जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को निगल कर नष्ट करते हैं। कुछ श्वेत रक्त कोशिकाएं कीटाणुओं से लड़ने के लिए रासायनिक द्रव जिसे प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी कहते हैं उत्पन्न करती हैं और जीवाणु द्वारा छोड़े गए विष यानी टॉक्सिन को नष्ट करती हैं। एक और तरीका है हमलावर रोगाणुओं को चिन्हित यानी टैग करना। इन चिन्हित हमलावरों को अन्य श्वेत रक्त कोशिकाएं आसानी से पहचान लेती हैं। दवाइयां हमारे सुरक्षा तंत्र को लड़ने में सहायता देती हैं। टीकाकरण हमलावरों से मुकाबला करने का एक विशेष तरीका है। टीके से हम श्वेत रक्त कोशिकाओं को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं। आज हम संक्रामक रोगों के कारण जानते हैं, इसलिए इनकी रोकथाम करना संभव हो गया है। आम जनता के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाने के लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं। सभी लोगों को अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य से बहुत प्रभावित होता है। इसीलिए रोकथाम के तरीके सामुदायिक तौर पर भी आवश्यक हैं। शायद आप इन उपायों से परिचित हैं।
हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं को इन कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना होगा, तभी संक्रामक रोगों से छुटकारा मिल सकेगा। The important elements of this program are the care of pregnant women and the newborn, the control of tetanus in the newborn, immunization of children against various diseases, especially polio. As a result of this program, the infant mortality rate, after remaining static for many years at 127, has come down in 1980 to 114 per 1,000 live births. Our target is to reduce it to 260 by the end of the century. ध्यान रहे, स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण के प्रति निष्ठा, सही रहन सहन, खान पान की जानकारी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है। इससे न सिर्फ हम स्वयं ही स्वस्थ रह सकेंगे, बल्कि अपने बच्चों और संपूर्ण समाज को भी स्वस्थ रख पाएंगे।